गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ टेस्ट सेल इन वर्टिब्रेट। तो प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी मु टेस्ट बोर्ड कोन बा हमर जोटा होछि केमो रिसेप्टर कोन विजुअल रिसेप्टर कोन रिसेप्टर रो क्लासिफिकेशन कोन डिटेल मु बुझी सारिछि। तो जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछ मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी जोटी कि से माने B.Sc 4th सेमिस्टर रो सबू कोर्स गुड़ाक पाइबे सिस्टमेटिक मु सब अपलोड कर देछि से माने पाइबे। तो आज देखा आम B.Sc 4th सेमिस्टर यहाँ हूँ आमर कोर पेपर 8 रमर जोटा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स रहीटा आमर अच्छे आ गोटे क्लास रे आमर कंपैरेटिव एनाटॉमीटा टोटल कंप्लीट हो। तो आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसिले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो आउ लाइक आउ शेयर करिवो। तो देखो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ टेस्ट सेल इन वर्टिब्रेट्स कौन। तो टेस्ट विषय तो आम जानी सारे जे कौ प्रकार टेस्ट आमर टेस्ट बोर्ड केमिति अछि कौ प्रकार ताको डिस्ट्रीब्यूट कराई ता विषय आम जानले। तो टेस्ट बोर्ड रीच देयर वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन कौन फिशेस व्वेयर ये आम देखा कंपेयर प्रथम फिश रु स्टार्ट करवा। तो फिश रे देख कहुई वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आउ ग्रेटेस्ट नंबर है। तो देख जोटा हूँ गैनोइड एंड टेलोइस्ट मान क्षेत्र में देखा जाए दे मे स्प्रेड ओवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द हेड एंड इवेन ओवर द बॉडी। तो सबू जगार ऑलमोस्ट सबू जगार यहाँ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती कौटा टेस्ट बोर्ड गुड़ाक है। तो देख स्कैवेंजर फिशेस सच एज देख सिलुरोइड जोटा हूँ कैटफिश किंबा बुल हेड एक्सेट्रा कौन व्हिच डिपेंड लार्जली ऑन एक्सटर्नल टेस्ट बोर्ड फॉर फाइंडिंग फूड इन देयर एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल टेस्ट बोर्ड दरकार कौन पाई से माने परिवेश रु खाद्य को पाइबा पाई है। मे आज मैनी आज 100,000 टेस्ट बोर्ड है केते देखो 100,000 बोल तो 100,000 टेस्ट बोर्ड है स्ट्रीवन ओवर द होल बॉडी एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्पेशल फूड फाइंडिंग बारबेल आउ पाखे कौन अच्छे बार जो स्पेशल फूड फाइंडिंग माने कौन गोटे स्पेशल खाद्य को से ग्रहण करने बा खोजापी बारबेल अच्छी इन सच फिशेस द gustatory centers is the visceral sensory area of the medulla are greatly enlarged and may cause immense bulges है term the facial and vagal top है। तापर देख इन सेलाचियंस मान को देखा जदि एंड टेट्रापोड्स मान को देखा जदि से क्षेत्र में जेनेराल टेस्ट बोर्ड आर कन्फाइंड टू द ओराल कैविटी एंड द फारिंग्स। तो बेसिकली एम ओराल कैविटी और फारिंग्स रे थाए। तो यहाँ किसी नहीं खाली से पोजिशन आउ से कौ प्रकार मोडिफिकेशन होती विषय खाली जाना। तापर जब हम बार्ड्स देखा हाव फ्यू टेस्ट बोर्ड एंड ए करस्पॉन्डिंग पुअर सेंस ऑफ टेस्ट अच्छी से यही प्रकार अच्छे कमती माने किछिटा मात्रा टेस्ट बोर्ड थाए आउ सेंस ऑफ टेस्ट बहुत पुअर बा बहुत कम मात्रा सेंस ऑफ टेस्ट थाए है। द टेस्ट बोर्ड आर एनाटोमिकली बेस्ट डेवलप इन मामाल। तो किंतु मामाल मान क्षेत्र में जो आम जो देखा जो टेस्ट बोर्ड अच्छे से वेल डेवलप्ड है वेयर दे लोकेटेड चीपली ऑन द पापिला of the tongue but also occur in the palate pharynx and epiglottis। तो आम देखो प्रत्येक पार्ट रे देखो एपिग्लोटिस रे भी अच्छी फारिंग्स रे अच्छी पैलेट रे अच्छी आउ जदि आम देखा बेसिकली मेन तो पापिलाई रे ही अच्छी जोटा हूँ आप टंग रे अच्छी जो पापिलाई सेठी अच्छी किंतु ता छड़ा पैलेट फारिंग्स आउ एपिग्लोटिस रे बोध लोकेट करि परिबा। तब देखो ऑल द टेस्ट बोर्ड मे बी मोन्टेड ऑन द कौन मोन्टेड ऑन द टंग पापिले थ्रू आउट द वर्टिब्रेट्स दिस रिलेशन इज मोर डेफिनाइट इन मामाल्स। तो मामाल्स रे बेसिकली टंग रो जो पापिले अच्छी से टेस्ट बोर्ड था यहाँ आम मामाल फाइंड आउट करूँ है। टेस्ट बोर्ड ऑफ मामाल ऑकर्स प्रिंसिपली ऑन द कौन फोलिएट तापर फंजीफॉर्म एंड भालेट पापिले है। तो यही प्रकार फॉर्म रे से देखा मिलती दे भेरी इन नंबर एंड सेवेराल 100 to 10 or more thousand है। तो यहाँ टेस्ट बोर्ड विषय जानले। तापर ऑल्फैक्टरी सेल विषय देखा
तो देख chemically receptive element for the sense of smell is the olfactory cell. This cell है located in the olfactory mucosa of the nasal cavity है जो आम शुंघिबारे बा आम स्मेल पाई बहुत मात्रा रे आम काम करे है। तो बेसिकली यहाँ हूँ olfactory cell बोली कह जाए आ कोठी देखा जाए आम नाजल केविटी रो जो olfactory mucosa अच्छे सेठी देखा जाए है। their peripheral processes into the mucous layer which is exposed to the air in the nasal cavity. Their central processes penetrate the ribiform plate on the ethmoid bone है मन रखिए ethmoid bone to the synapse है which mitral cell is topped olfactory glomeruli है. In addition to olfactory cell, the olfactory mucosa is also made up of support cell and the mucous secreting cell है. तो तांगर olfactory cell को छाड़देले olfactory mucosa मध्य तांगर कौन होची विभिन्न प्रकार support cell तैयारी आउ mucous secreting cell द्वारा तैयारी है. The entire surface of the olfactory mucosa कौन occupied a little more than 5 cm square. तापर कॉन्शियस एंड रिफ्लेक्स ऑल्फैक्टरी पाथवे देखिबा. तो देखो द एक्शन ऑफ मिंट्रल सेल पास फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब centrally towards the brain as well as olfactory tract. The tract they then divided to form the separate medial and lateral olfactory tract है. तब देखो lateral olfactory tract जो देखिबा ultimately terminated in the कौन पेरी एमाइक जोटा जी डालोइड है कोटेक्स है ऑफ द कौन टेम्पोराल लोब. तो टेम्पोराल लोब जो अच्छी से जगार यहाँ हूँ तो कौन तुम टर्मिनेट हो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्टा कौ जगार पेरी आमेक डालोइड कोटेक्स है. दिस पाथवे प्रोबाब्ली प्रेजेंट इन द कॉन्शियस स्मेल पाथवे है कॉन्शियस स्मेल पाथवे बोली कहबा. मेडियल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट may terminate in the septal nuclei है septal nuclei पाखे terminate होइछि. the contralateral amygdala or the lateral continuation of the hippocampus है. hippocampus जानि छ तमे है hippocampus रो ए प्रकार देखा जाए. तापर देखो the body reflexly respond to both प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर माने कौन स्मेल. तो यही जो तार जो बॉडी अच्छी से बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करे तुम जदि भल बासना को भी से एक्सेप्ट करे कि कौन सी दुर्गंध को से जानीपे है. अनप्लीजेंट ऑर्डर जोटा कहुए. द रिफ्लेक्स रेस्पॉन्ड आर क्लासिफाइड आज तो केते प्रकार क्लासिफाई होची जैसे भिसेरोसोमाटिक और भिसेराल बोली कहा जाए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रेस्पॉन्ड है. भिसेरोसोमाटिक रिफ्लेक्स इंक्लूड द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज फेशियल मसल्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी है इन रेस्पॉन्स टू बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर है. तो बेसिकली ये कौन कर ये दुर्गंध हो बा बासना हो सबुतक को से करते आ रिफ्लेक्स जो मूवमेंट अच्छे बेसिकली यार कौटी होता है भिसेरोसोमाटिक और रिफ्लेक्स आईज रे भी होता है फेशियल ऑर्डर बा फेशियल मसल्स बा आम मुखरे जहाँ भी आम जो चेहरा रे जहाँ भी मसल्स अच्छी द्वारा भी होता है नेक किंबा रेस्ट ऑफ द बॉडी है. तार भिसेराल अच्छी रिफ्लेक्स इंक्लूड सालाइभारी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन है. तो कौटी देखा जाए यहाँ सालाइभारी और गैस्ट्रिक सिक्रीशन देखा जाए इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन प्लीजेंट ऑर्डर एंड वोमिटिंग इन रेस्पॉन्स टू द भेरी ऑब्नोसियस ऑर्डर है. तो जो भेरी बहुत प्रकार जदि आम अति दुर्गंध पाइबा ताले वोमिटिंग पर्यंत से आमको रेस्पॉन्स करिथाय है. बोथ द मेडियल एंड लैटरल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट द रिफ्लेक्स पाथवे. तापर ओडोरेंट माने कोन देखिबा. अनलाइक टेस्ट नो सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक ऑल्फैक्टरी मोडालिटीज हैज बीन एग्रीड upon. However, for any odorant to be an effective stimuli, it must be volatile. Water and lipid solubility are also desirable quality. Volatility
इज द नेसेसरी टू एलाउ द केमिकल है केमिकल को से एलाउ करे कौन टू बी एडिक्वेटली ड्रॉन इनटू द नाजल कैविटी को से एलाउ करे while water solubility is necessary since the odorant most penetrate the olfactory mucosa है जदि olfactory mucosa को से पेनिट्रेट कला है ताहले हमको कौन से जगह हमको वाटर सोल्युबिलिटी दरकार है इन ऑर्डर टू रीच द ब्रॉस बॉर्डर ऑफ द olfactory cell there is even some evidence that the odorant most penetrate the broad border membrane in the order to effectively stimulate the olfactory cell in which case lipid solubility would be a desirable feature in any event the odorant establish a receptor potential in the olfactory cell है which then give rise a impulse production in the mitral cell of the olfactory bulb तो तापर देखो the mechanism of olfactory cell stimulation of the mitral cell is unknown सेटा हमें जानिनु but there is some evidence that the chemical transmitter may be involved तापर देखो olfactory discrimination कौन तो देखो when a odorant of the threshold concentration is present to the olfactory epithelium the subject is barely aware of its presence if the concentration is increased the sensation increase as well finally the sensation reach the maximum and further increase in the odorant concentration elicit no further increase in the sensation ता माने कौन when the odorant of threshold माने कौन ता trigger point concentration is present to the olfactory epithelium है the subject is barely aware of its presence तो मन रखो ये मुझे बुझे दूचे है if the concentration is increased the concentration तारा increase है the sensation increase ता sensation मधे increase होता है किंतु फाइनाली कौन होता है सेंसेशन तार कौन होता है रीच करे केते मैक्सिमम लेवल पर्यंत से रीच करे फर्दर कौन होता है ऑर्डरेंट पर्यंत से मधे इंक्रीज करि पारे है किंतु आउ ताटू आउ अधिक से जाई परिबो नै नो फर्दर इंक्रीज इन सेंसेशन है गोटे तार थ्रेशोल्ड पॉइंट पर्यंत से जाई परिबो allowing the individual differences maximum sensation is usually reached with a odorant concentration 10 to 50 times greater than the threshold है this does not allow the dynamic range है it is considerably less or for instance than the range of for vision जोटा होची about जोटा होची हमें 5 lakhs to हमें कोई पारिबा जे 1 है तापर देखो if would appear that the olfactory system is better designed for the odor detection than for the odor quantification further support for the idea that odor detection is perhaps the principal role of the olfactory system in the adaptation which occurs in the face of the sustained stimulus है the firing rate এইটা টিকে দেখো এটা টিকে ইম্পর্টেন্ট দেখো the firing rate of the olfactory tract neuron might decrease by as much as 50% है within the first second or two following odorant application है this rapid decline after the first second or two but the signal is very weak केतेबेले सिग्नलटा very weak weak हो जाए बहुत weak हो जाए केतेबेले after the minute or no so तब देखो electroolfactogram कौन देखो when the odorant is presented in the olfactory epithelium a monophagic action potential called the electroolfactogram जो EOG can be recorded है the amplitude of the EOG is a function of the कौन odorant concentration the amplitude एटा को मन रखी तो परीक्षा रे पढ़ी पारे है amplitude है and
in all probability present of the combined receptor potential may be the କ'ଣ olfactory cell। ତାପରେ ଦେଖ internal chemoreceptor କ'ଣ, ତ ଦେଖ receptor that sense chemical जोटाको आम कहूँ originating outside of the body are responsible for the sense of odor, smell, taste है। इंटरनल chemoreceptor कौन अच्छे हेल्प द मॉनिटर केमिकल प्रोड्यूस्ड विदिन द बॉडी है। से कौन करे इंटरनल chemoreceptor कौन करे आम जोटा जानले एक्सटर्नल आम जानले कौन एक्सटर्नल तो जानले आम जोटा स्मेल टेस्ट एगुड़ा सब तो जहाँ भी है, किंतु इंटरनली chemoreceptor काम है मॉनिटर करिवो केमिकल को है, से केमिकल को मॉनिटर करिबारे हेल्प करिवो एंड नीडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है। हेयर सेल इज द lateral line organ of fishes detect water movement and hair cell is the vestibular apertures of terrestrial vertebrates। तो देखो हेयर सेल गोटे अच्छी ऑर्गान जोटा कि हेयर सेल गोटे अच्छी कहार फिश मानकर बेसिकली ये कौन करे वाटर मुवमेंट को डिटेक्ट करि पारे से जानी पारे, किंतु से जगार आम कहबा जदि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट मान क्षेत्र में ये हेयर सेल कौन अच्छी वेस्टिबुलर आपर्चर्स हिसाब से अच्छी है प्रोवाइड द सेंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेस्टिबुलर आपर्चर्स का मन अच्छी जोटा टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मान पाखे है। इंटरनल chemoreceptor include the carotid body and aortic chemoreceptor and the chemically sensitive cell है in the respiratory and vasomotor center of the कौन ब्रेन स्टेम। तापर देखिबा जदि lateral line system, the lateral line system provide fish with a sense of distant touch है। जदि distance touch है ताहले से जानिबा को पाई थाए enabling them to the sense of object that reflects pressure wave and low frequency vibration है। This enable a fish to detect prey, for example and to swim in synchrony in with the rest of its school है। It also enable a blind cave fish to sense its environment by monitoring changes in the pattern of the water flow past and the lateral line receptor। तो यार बेसिकली काम कौन है ये दूर मध्य सेंस करे बा जानी पारे जे वाटर को प्रकार गतिविधि होची बा मूवमेंट होची बा तार प्रे कैप्चर मध्य बा प्रे को डिटेक्ट करिबारे मध्य सहायता करे है। द lateral line system is found in amphibian larva but lost in metamorphosis and not present in the terrestrial vertebrate। तो एटा बेसिकली ये जो lateral line टा होची आउ मध्य amphibian मानकर लार्वाल क्षेत्र रे आमे देखिबा को पाऊ, किंतु जेतेबेले यार मेटामॉर्फोसिस कि एडल्ट स्टेज को आसे सेतेबेले एटा रिड्यूस हो जाए बा रहे नाही एवं अलगा जो वर्टिब्रेट्स मान पाखरे भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मान पाखरे ये बिल्कुल देखा जाए नाही। तो आमे देखि परबा एई जगह देखो तार lateral line तो आमे देखिबा को पाउछो। तो फिश रो lateral line देखो एटा होची तार lateral line हैला। तो ये lateral line रो काम कोन होची देखो एटा होची ताको टिके आउट के भल के देखिबा एटा होची ताको जदी आमे एनलार्ज कर देखिबा तो इथे देखो lateral line रो स्केल सब अच्छी जगह रे एटा सब। तापर देखो ता तळे एठी देखो एटा गोटे कैनाल टे अछि पोजिस करछि कैनाल lateral line organ ए जगह अछि हैला। एटा होछि lateral line organ गुडाको एई जगह देखो नर्व अछि हैला, नर्व अछि आ एठी देखो एटा गोटे ओपनिंग अछि हैला। तापर देखो द सेंस provided by the lateral line system supplement the fish sense of hearing which is performed by the different sensory structure। The structure and the mechanism involved in hearing will be described in the later section। सेटा छाड़ी दियो आमे जानिबा परे हैला। The lateral line system consists of sensory structure within a longitudinal canal हैला। longitudinal canal तुमको देखैली ना को प्रकार canal अछि एंती कि ना गोटे canal टे अछि हैला। longitudinal canal in the fish skin that extend along each side of the body and within several canal in the head हैला। The sensory structure also known as कोन hair cell because they have hair like processes तांको hair like structure अछि at their surface हैला that project into a gelatinous membrane called the cupula हैला। ताको मन रखितो
লিটিল কপ বা କ୍ୟୁପୁଲା ଲାଟିନ୍ରେ ଲିଟିଲ୍ କପ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ସେଠି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲାଟିନିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟୁପୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ ହେୟାର ସେଲ୍ ଦ ଆର୍ ଇନରଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସେନ୍ସୋରି ନ୍ୟୁରନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟୁ ଦ ବ୍ରେନ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଆମେ କମ୍ପାରିଜନଟା ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମେକାନୋ ରିସେପ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ମେକାନୋ ରିସେପ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ମେକାନୋ ରିସେପ୍ଟର, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମ ଚାପ୍ଟରଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।